Okay guys, today I'm proudly wearing my Wonder Woman shirt because I personally feel all us women out there are Wonder Woman, including myself, because we know how to juggle our life so well and balance it so well. So we all deserve the title of being Wonder Woman. ओके आज मैं अपनी वंडर वुमन की शर्ट पहन रही हूँ। मैंने ये शर्ट इसीलिए पहननी है बिकॉज मेरा ये यकीन है कि हम औरतें कुछ भी कर सकती हैं। हम ऑनेस्टली वंडर वुमन हैं बिकॉज हम अपने घर का भी ख्याल रखते हैं, बाहर का भी ख्याल रखते हैं, बच्चों का ख्याल भी रखते हैं। हम अपनी लाइफ को इतनी अच्छी तरीके से बैलेंस करते हैं कि हम सबको ये टाइटल होना चाहिए कि हम ट्रूली वंडर वुमन हैं बिकॉज हम हैं। तो all of you women out there, believe in yourselves always that you guys truly are Wonder Woman. सारी औरतें अपने खुद पे यकीन करें because हम सब कर सकते हैं जो हम चाहें. So this is the message I wanted to show you guys today by wearing this shirt. So all you Wonder Women, come along with me. Hi everyone, welcome back to my channel, and if you're new here, welcome. Today I will be taking you guys on a tour of the Van Heusen Museum, which is located in Rochester Hills. आज मैं आपको एक tour दे रही हूँ म्यूजियम का, उसका नाम है Van Heusen Museum. So stay tuned with me and I will give you guys a tour of it. Guys, this is their farmhouse, the Van Heusen farmhouse, and down that way I will take you later. That's where the dairy farm is and everything like that. यहाँ पे उनका farmhouse का घर है actually, और जो dairy farm है वो थोड़ा नीचे है, उस पे भी आपको लेकर जाऊँगी. I'm going to talk a little softly in here. This is the farmhouse, and this whole Van Heusen museum is actually, they used to be a dairy farm back in the days, and this is their farmhouse that I'm taking you guys on a tour of. ये जो म्यूज़ियम में हम आए हैं, यहाँ पे काउस डेयरी फार्म था, और ये जो हम अभी जिसके अंदर हैं वो एक फार्म हाउस है उनका, तो वो दिखाती हूँ आप लोगों को. Look at this typewriter, so cute. Everything here is the original Van Heusen family house. Everything in here is original. यहाँ पे जो कुछ भी आप देख रहे हैं ये Van Heusen family का original pieces हैं. ये डेयरी फार्म थी तो इसीलिए ये सारे मिल्क के बॉटल्स हैं. This was a dairy farm, so that's why they have all these milk bottles. Again guys, all of these pieces that you see are original. This is beautiful. Guys, look at this olden days radiator. ये पुराने ज़माने का heater radiator है. ये phone भी इतना cute. Yeah, there you go. Hey guys, let's head upstairs. ऊपर चलते हैं. Oh yeah. Right. It is great. Lots of windows. Yeah. Right. So these must be the stairs, the original stairs. Cute.
cute. These floors are all original wood, so that's why you hear the squeak. ये सारे जो floor का squeak आप सुन रहे हैं because ये hardwood floor है और पुराने ज़माने का है, इसीलिए वो squeaking आवाज़ आ रहा है. Did I give you the OPC? Our barns were featured on the front cover of the OPC magazine for all historic preservation that we did. Yeah. ये आज मेरी शर्ट के साथ ही जा रहा है. Yes. Okay guys, you must be wondering why this creek is called Stoney Creek. It's because this creek has so many stones inside of it. आप लोग सोच रहे होंगे कि इस creek का नाम Stoney Creek क्यों है? इसके लिए इसकी वजह से इसका नाम ये है because इसके अंदर creek के बहुत सारे पत्थर हैं. वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ. देखें, ये देखें इसके अंदर कितने सारे पत्थर हैं. Look at all the stones in there. Guys, there was a nice little swing right here, so I thought why not go for a swing. So यहाँ पे एक झूला पड़ा था तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे बैठते हैं. मजे का झूला, इतनी अच्छी अच्छी हवा आ रही है. Such a nice breeze outside. It's really a beautiful, beautiful day outside today. Guys, that's the barn over there. वहाँ पे उनकी dairy farm थी. Okay everyone, I hope you guys enjoyed this tour of the Van Heusen farm and their farmhouse. I hope आप सब लोगों को इस farm and farmhouse का tour में मज़ा आया हो. Don't forget to subscribe to my channel if you haven't already done so. Share this video with your friends and family, like and comment on it. Remember, always believe in yourself, love yourself, and take care of yourself. Until next time from Van Heusen Farm. Bye guys.